Assalamu alaikum. My name is Dr Asif Hanif. I am Assistant Professor of Pulmonology, King Edward Medical University, Mayo Hospital. Today's lecture is on COVID-19 management, and this can also be used in other critically ill patients, and it's going to cover management of the COVID-19 as well as the complications and the drug treatment of the COVID-19, and also the patients who are critically ill and admitted in the ICUs that can be managed, how they can be managed. That I will try to cover all these aspects. As you know, Wuhan city was the hub of novel coronavirus in 2019, and rapidly it converted into the global pandemic, and the cause was acute respiratory distress syndrome due to SARS-CoV-2. क्लिनिकली अगर देखा जाए तो इस पैंडमिक में हमने कोविड-19 को डिवाइड किया इन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, नॉन सीवियर, सीवियर एंड क्रिटिकल पेशेंट्स. एसिम्प्टोमेटिक वो थे जिनके टेस्ट पॉजिटिव थे लेकिन सिम्टम्स कोई नहीं थी. नॉन सीवियर वो थे जिनकी सैचुरेशन 94% से ज़्यादा थी. सीवियर वो थे जिनकी सैचुरेशन 94% से ड्रॉप कर गई थी और रेस्पिरेटरी रेट 25 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा था इन स्पाइट ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन, लेकिन उनको NIV, HFNC या मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं थी. और क्रिटिकल वो थे जो कि स्ट्रेट अवे NIV, CPAP, BiPAP, HFNC या मैकेनिकल वेंटिलेटरी नीड के हामिल थे. कुछ पेशेंट जो कि सीवियर थे, जो कि मेरी इस लेक्चर का डोमेन है, जो कि सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स को डील करेंगे. जो कि सीवियर पेशेंट्स थे उनको हमने जनरल वार्ड में दाखिल किया, और जो क्रिटिकल थे उनको हमने ICU में विद नेगेटिव प्रेशर रूम में दाखिल किया. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स जो हमने प्रीडोमिनेंटली देखे, जो कि इस लेक्चर की आज डोमेन भी है, वो ARDS, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, हाइपरकैप्निया स्पेशली इन दोज पेशेंट हु आर ऑफ COPD पेशेंट एंड नार्कोटिक ओवरडोज के थे, फीवर, वैक्स एंड वेनिंग फीवर, और वो वाले पेशेंट जो कि जिनको वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी, वो तकरीबन 20 to 100% केसेस जो है ICUs में इधर इन द फॉर्म ऑफ NIV या इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ी इन्हें. अगर आप ओवरऑल देखें तो 70% जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो 80% तकरीबन पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और 15% वो होते हैं जो कि सिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये सीवियर कैटेगरी तक पहुंच जाते हैं. लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो 2 से 5% केसेस जो हैं वो सीवियर कैटेगरी में आते हैं, जिनको ICUs की ज़रूरत पड़ती है. उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया, डिलीरियम, स्ट्रोक, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, अरिथमियाज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर, लो यूरिन आउटपुट और रीनल इनसफिशिएंसी, और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो कि ड्रग्स की वजह से हुई, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो कि वेंटिलेटर इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस थी. उसकी वजह से पेशेंट जो है एज अ ओवरऑल एक पैरानोमिक शक्ल में जो है वो प्रेजेंट किया, जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ पेशेंट्स जो है they presented in the ICUs of the COVID-19, and they may also present in other ICUs which are not to be suffering from COVID-19 but having any of the atypical pneumonias or any of the ARDS due to other causes, or the conventional ARDS that can present in a similar way, and the management will be focused on the critical ICU management of these critical patients. Furthermore, the complications which were observed, they were actually the bacterial pneumonias and the infections which are very prevalent and very high already in our ICUs, because the IPC control in our ICUs are not to be that good. And the infections which presented, they were the bacterial pneumonias, vascular catheter infections, urinary tract infections, strongyloides reactivations. Then there is one more thing which was very, very important, which we observed in our ICUs, that was barotrauma. इसमें मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि बैरोट्रोमा जो है वो 2 तरह का है, एक मैक्रो बैरोट्रोमा और एक माइक्रो बैरोट्रोमा. जो मैक्रो बैरोट्रोमा होता है उसमें जो macroscopically they are visible, radiologically they are visible. For example, there may be a pneumothorax, there may be air trapment, there may be pneumomediastinum, there may be pneumopericardium, there may be pneumoperitoneum, there may be hyperinflation of the left lower lung, there may be large lung cysts. They are all macrobarotromas.
Then there is microbarotrauma, which is actually the inflammatory response. Inflammatory response that is actually the neutrophil activation syndrome, macrophage activation syndrome, and large number of other mimicry of the inflammatory system, immune system activation, in which the organs that become inflamed, they become dysfunctional, especially the lungs when the patient is on mechanical ventilator. That term is called biotrauma. Microbarotrauma is called biotrauma. Then there is another term which is called as volutrauma. वॉल्यूम से रिलेटेड, अगर फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट है जिसका वॉल्यूम जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन, वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने की वजह, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने की वजह से जो ट्रॉमा टू द लंग्स आता है दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूट्रोमा. बैरोट्रोमा इज़ ड्यू टू अ प्रेशर. प्रेशर जब इंक्रीज़ करते हैं तो बैरोट्रोमा प्रोड्यूस होता है और बायोट्रोमा प्रोड्यूस होता है, जबकि वॉल्यूट्रोमा दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम. एक होता है अर्गोट्रोमा. अर्गोट्रोमा इज़ दैट इन विच द वेसल्स आर involved, and trauma to the vessels that take place due to the mechanical ventilation, pressure changes and transpulmonic and transthoracic pressure changes की वजह से जो trauma to the blood vessels होता है that is called ergotrauma. उसके बाद बहुत सारी दूसरी complications that can be present like aspiration that may lead to repeated desaturation and DVT, then bed sores. Then there may be trauma due to the NG tube, there may be problems in the feeding, there may be overload, there may be infections related to the catheter lines and so on. Large number of complications you come across while managing a critically ill patient. Then certain lab tests, they are being used for in order to know about the CRS, which is very persistent in COVID-19, persistent fevers, and there is elevated D dimers, LDH, ferritin, interleukin 6, TNF, mimicry of the interleukins, in which the highlighted interleukin is interleukin 6. The laboratory abnormalities have been associated with the poor prognosis that include, these are some of the labs which are, if present, they may have poor prognostic factors. Like D dimers अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो ये poor prognostic factor यानी कि rapid progression में convert उसको जस्टिफाई करता है. जैसे CRP अगर 100 से ज़्यादा है, LDH 245 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा है, troponin 2 times above अपर लिमिट से ज़्यादा है, और ferritin 500 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, और CPK if it is more than 2 द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल, एंड एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट. ये एक बहुत स्पेशल टर्म जो कि जब कोविड शुरू में आया था तो उसमें एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट इफ इट इज़ मोर लेस दैन 800 माइक्रो per liter, then it is having a very poor prognosis. NLR ratio that was based on the similar count as well. We would be able to know whether the patient is having rapid progression or not. In the rapid progression, we have two criteria. One is the call criteria and other one is the international criteria, which is based upon age. If it is more than 60, ischemic heart disease. वो जो हम 5 C's पढ़ा करते थे मेडिकल कॉलेजेस में, CKD, CCF, CVA, COPD, वो सारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और डायबिटीज़ इज़ एडेड वन. ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी रेट इफ इट इज़ मोर देन 30, हार्ट रेट इफ इट्स मोर देन 125 एंड द सैचुरेशन इफ इज़ लेस देन 93 एट द रूम एयर, दे आर हैविंग दोज पेशेंट्स विच कैन प्रोग्रेस इनटू अ क्रिटिकल स्टेट. And the CAL criteria, CAL, C for comorbidity, A for age, and L for absolute lymphocyte count, and the LDH. On the basis of these two criteria, we would be able to know whether the patient may progress into a critical state from a very normal state or not. Now, the first thing which is very, very common is sepsis. Any of the infection in the blood, that is called sepsis. And if any of the organ is being involved, that is called septicemia. If the infection is present and any of the following features, either of the two is present, that is called sepsis. If the temperature is more than 38 or less than 36, और अगर heart rate 90 से ज़्यादा और respiratory rate 20 से ज़्यादा, और PCO2 is less than 32, क्योंकि hyperventilate करते हैं patient sepsis में, और TLC count अगर 12,000 से ज़्यादा है या 4,000 से कम, अगर इसमें से कोई दो features मौजूद हैं और patient is having an infection, that is called sepsis. सेप्सिस में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें वीक पल्स, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, लो ब्लड प्रेशर, यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस करता है, मॉटलिंग ऑफ द स्किन दैट कैन टेक प्लेस, पेशेंट इज बेट कोल्ड, क्लैमी, स्वेटी, दैट मे बी प्रेजेंट, इररिस्पॉन्सिव. In order to assess sepsis, we have SOFA score.
अब मैं इसकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि सोफ़ा स्कोर जो है उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें पीएफ रेशो, प्लेटलेट काउंट, बिलिरुबिन और हाइपोटेंशन, जीसीएस एंड द क्रेटिनिन लेवल आप चेक करते हैं। इसका टोटल स्कोर जो है वो 24 होता है, जिसमें 0 से 4 तक इसके स्कोरिंग सिस्टम कराया जाता है, जिसमें 0 इज़ द लीस्ट वन एंड द 4 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर आप देखें तो ये स्टार्ट होता है, अगर आप ऊपर से नीचे आएँ तो ये ब्रेन में जीसीएस आप करते हैं, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें आप पीएफ रेशो करते हैं। उसके बाद आप हार्ट, जिसमें आप मैप स्कोरिंग करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ एक्चुअली द 1/3 सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, and then there is liver in which bilirubin is being assessed, and the renal system जिसमें आप creatinine को assess करते हैं। तो depending upon these values you are going to have a SOFA score, maximum is 24, and if you have a SOFA score of जैसे कि स्लाइड में बिल्कुल वाजे है कि अगर आपका SOFA score अगर 9 पॉइंट्स तक है तो आपकी जो मोर्टेलिटी है दैट इज़ रेंजिंग अबाउट 30%, और अगर 9 to 11 पॉइंट्स अगर है तो एकदम मोर्टेलिटी जो है वो इंक्रीज़ करके 40% और 50% के दरमियान में फॉल करती है, और अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 11% तो आप मोर्टेलिटी की हाइट देखें तकरीबन 90% तक अप्रोच कर जाती है। सोफ़ा स्कोर एक डिफ़िकल्ट स्कोर है, लेकिन इफ़ यू हैव एन एमरजेंसी यू कैन हैव अ क्विक सोफ़ा स्कोर, जो कि सर्स की रिप्लेसमेंट है, जो कि सर्स इज़ नो लॉन्गर इज़ बीइंग यूज्ड नाउडेज। नाउ क्विक सोफ़ा स्कोर कैन बी यूज्ड इन विच द ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी एंड जीसीएस इज़ बीइंग असेस्ड। इफ़ द बीपी इज़ लेस देन 100, रेस्पिरेटरी इज़ मोर देन 20 एंड जीसीएस इज़ लेस देन 14, अगर इन दोनों में से दो चीज़ें हैं तो क्विक सोफ़ा स्कोर इज़ पॉजिटिव। So what is the need of the quick SOFA score? You can start up straight away with the antibiotics. What is the management of the sepsis now? Sepsis are treated definitely with the antibiotics. Empirical antibiotics has been started, but in our setup in which the COVID was very prevalent, in COVID we just escalated a system in which we started with the oral antibiotics if the patient is very stable and patient is COVID positive and without oxygen, we are going to start up with the oral antibiotics. If the patient is on 5 liters of oxygen, we can start with third generation cephalosporins, or if it is more than 5 to 10 liters of oxygen, we use combination of the cephalosporins plus macrolides or quinolones. If the patient is on having more than 10 liters of oxygen requirement is present, or patient is on NRM, NIV or IPPV, then broad spectrum antibiotics like Meronam, Tazopep, Moxi, Slustatin, and combination of the other upper antibiotics that can be used according to the culture sensitivity report afterwards, and then the individualization of the patient, what are the LFTs, what are the RFTs, which we have already sent in the emergency department, and we have already sent the profile of the COVID-19 already. We would be having that profile in a couple of hours in our hands, so that we can adjust the antibiotics according to the test reports, and the antibiotics will be continued as a prophylaxis as well as a treatment strategy in the COVID-19, due to a reason that the bacterial infections are quite higher in our ICUs because of the low resource setups in which the IPC is not to be that good. So we use antibiotics as a part and parcel depending upon the condition of the patient. This is very important, that sepsis 6 is very, very important, because we are going to start that sepsis 6 management in the ICU as well as the emergency, as we did in the COVID-19 in the Mayo Hospital Pulmonology Department and the emergency department. The sepsis 6 was implemented in the emergency department, in which हम 3 चीज़ें पेशेंट को देते हैं और 3 चीज़ें पेशेंट से ले लेते हैं। जो 3 चीज़ें पेशेंट को दी जाती हैं, these are oxygen and IV antibiotics and the IV fluids. जो 3 चीज़ें पेशेंट से ली जाती हैं, these are the blood cultures, lactate level and the urinary output monitoring, and that should be done in 1 hour, and it is not easy. If we are going to have sepsis 6 in 1 hour, we have very low mortality and the morbidity of the patient, and the patient may not go into ICUs. The burden in the ICUs, the reason for that is due to the deficiency of the sepsis 6 management in different setups. We are going to have full ICUs. If we would be able to give this sepsis 6 in 1 hour to the patient, we may avoid the ICU admission of the patients. Then if the patient's blood pressure that goes down, if the BP of the patient is less than 90 and patient is not able to maintain the blood pressure map
of more than 65 millimeter of mercury in spite of the vasopressors, and the lactate is more than 2 millimole per liter, and there is no hypovolemia, the patient will be labeled as septic shock. इसमें मैं एक बात ऐड करता जाऊंगा कि इन द मैनेजमेंट ऑफ द सेप्टिक शॉक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन द पेशेंट कम्स इन योर सेप्टिक शॉक you have to just convert the minutes into hours, because in septic shock patient is having very little time. You have to give full-fledged treatment to the patient. For example, if the patient won't be able to build up a blood pressure, then what you're going to do, you are going to give some of the inotropes. The first drug in septic shock is the norepinephrine. You start with the norepinephrine, in which you are going to have a vasoconstriction and the contractility of the heart that is going to increase. When the vasoconstriction is being present and the contractility that increases, the blood pressure that a bit rise a bit. Followed by the second drug which is going to be used is the dopamine, which we used in COVID-19 ICUs, in which more contractility and more vasoconstriction that is going to be produced, due to which the blood pressure that rises a bit. And when the urine output that comes, it is actually the auto-regulation of the kidney, which is having a blood pressure of 80 to 180. If the blood pressure is more than 180 and if it is less than 80, the blood supply to the kidney that drops. If the BP of the patient is going to be less than 80, or the auto-regulation of the kidney that drops, and the urine output will be negative. But if you give, if the urine output that comes, it means the blood pressure rise a bit, so that due to the presence of the norepinephrine and dopamine, so that the blood flow to the kidney that is being increased, then you are going to start the Dobutrex, in which the mild vasodilatation that is going to take place, along with some contractility of the heart as well, due to which the blood pressure may fall a bit due to reflex vasodilatation due to Dobutrex, which is opposed to the vasoconstriction which was produced by the norepinephrine and dopamine. And this is the time when the patient may get critical due to the Dobutrex sometimes, because the vasodilatation that takes place, which is a hallmark of the septic shock too, in which the vasodilatation effect is being present, in which the reflex vasoconstriction phenomena is lost in the septic shock, due to which the vasoconstriction does not take place, due to which the vasodilation is being present, and we are further augmenting it due to the presence of Dobutrex. So if the blood pressure of the patient that is maintained even after the addition of the Dobutrex, where we are going to monitor the blood pressure on the cardiac monitor, and we'll keep on doing the same management with 3 drugs like norepinephrine, dopamine and Dobutrex. In the latest guideline, now I would like to add in that as we practice this, and now we are known that the latest guideline that include that norepinephrine is the first drug, and the second drug is the vasopressors that should be used. So we managed in a similar way, जैसे मैंने आपको पहले बताया, now it is recommended to use vasopressor as a second drug in the septic shock. Then you come to know about the causes of the septic shock and treat them appropriately. ARDS is acute hypoxemic respiratory failure within 1 week of worsening of the respiratory symptoms, along with bilateral pulmonary infiltrates, not fully explained by effusion, lobar or lung collapse or nodules, and the cause of the cardiac failure is not present in acute respiratory failure. As this is the definition of the ARDS, and then the Berlin classification of ARDS that includes mild, moderate and severe. If mild 200 और 300 के दरमियान PF ratio है, it is mild. Moderate अगर 100 और 200 के दरमियान PF ratio है, it is moderate. और अगर 100 से कम है तो it is severe ARDS. इन द पैथोलॉजी अगर देखें तो इसमें एक्सुडेटिव, प्रोलिफरेटिव और फाइब्रोटिक फेज होता है. एक्सुडेटिव फेज ऐसा होता है जिसमें एल्वियोलाई दैट हैविंग एन एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एल्वियोलाई दैट टेक्स प्लेस, and which results in the denudation of the epithelium, as well as the surfactants are being lost. Surfactant type 2 pneumocytes produce करते हैं, तो वो surfactants का जो production by type 2 pneumocytes है, वो rate of production कम हो जाता है, लेकिन rate of loss जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से alveoli that become more damaged, and the atelectasis and the collapse of the alveoli that takes place. And the proliferative phase, if the patient survives on this, the proliferation of the
surfactants and the pneumocytes and the epithelium that takes place and that stays for a while. Then ultimately, if the patient survive and the patient is going to be a long-term COVID-19 infection or the other conventional other conventional ARDSs, the fibrosis of the alveoli that will take place and permanent collapse of the alveoli that will take place, and there may be a hyaline membrane formation, and the microvascular thrombosis may also be observed in a exudative and the proliferative phases. These are the findings which are going to be associated with DAD, like diffuse alveolar damage. Other findings that may result in the presence of the bacterial pneumonia and the fibrinous organizing pneumonia. This is one of the picture in which the ARDS is very prevalent. That you can see that ARDS on the above X-rays, bilateral infiltration, sparing the costophrenic angles, and the PF ratio of this particular patient was between 200 and 300. It was a moderate ARDS, and the pathogenesis, which I explained, is pictorially projected on the slide now. It is a patient with severe hypoxemic respiratory failure, and severe hypoxemia is present in this patient in spite of giving the oxygen. Patient is not responding to the oxygen. And some of the other condition in which you are keep on giving the oxygen, patient do not respond, are the AV malformation and the pneumothoraces and the pneumomediastinum. You keep on giving oxygen, patient do not respond. ये एक पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन है जो कि ARDS को रिप्रेजेंट करता है. ये अगर इसको देखा जाए तो ऊपर एक ये वाला जो पेशेंट है, ये एक नॉर्मल पेशेंट है जिसमें एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड जो है वो एक नॉर्मली प्रेजेंट होती है. जब आप वेंटिलेट करते हैं तो ये लंग जो पूरा प्रेजेंट है, ये इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल साइकिल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है. व्हेन देयर इज अ CT स्कैन ऑफ दिस पेशेंट लाइक H टाइप ऑफ द ARDS, in which this picture that is going to be the graphic representation of it, in which the fluid that exudated into the alveoli, and this much of the lung that has been occupied by the fluid, and the exudation of the fluid into that alveoli, and the normal lung that is very little, and you are going to put the patient on the ventilatory support. or if the patient even कि अगर ventilatory support पे नहीं भी है तो इस lung के साथ patient oxygenation को carry out इतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता. तो अगर आप ventilatory support पे patient को डालते हैं तो ये वाला lung जो है वो अगर आप tidals patient को जिस तरह के एक lung protective strategy के थ्रू आप देते हैं, तो जब ये वाला parenchyma of the lung reserve बाकी रह जाएगा, तो आप जब वेंटिलेशन करेंगे तो ये लंग उतना इन्फ्लेट, उसके लिए इतना प्रेशर जो कि इस लंग के लिए चाहिए वो इस लंग के लिए नहीं होगा. जब आप इसको उस हाई प्रेशर के साथ इन्फ्लेट करने की कोशिश करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दैट मच फ्लूइड ऑन दिस रिजर्व of the lung is present, so that will result in some of the injuries to the lungs, like barotrauma that can take place, peace leak that can take place, biotrauma that may be the possibilities in such patients. तो जब भी ARDS डेवलप होता है तो अगर आप देखें तो ये एक सुपाइन पोजीशन पे अगर पेशेंट लेटा हुआ है ARDS का, तो यहाँ पर इसमें ये एक एंटीरियर लंग है, एंड दिस इज़ द डोर्सल लंग विच इज़ कोलैप्स्ड. बट इफ़ यू आर गोइंग टू पुट, जब ये वाली कंडीशन होती है तो इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है डोर्सल लंग की वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है. तो इस कंडीशन में जो वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन है दैट विल बी अ बिट लो. लेकिन जब हम इस पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन में करते हैं तो ट्रांस थोरेसिक और ट्रांस पल्मोनरी और डायफ्रैग्मेटिक और हार्ट की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से डोर्सल लंग जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलैप्स था, डोर्सल लंग भी एक्सपैंड कर जाता है. तो जिस डोर्सल लंग के एक्सपैंड करने की वजह से जो वेंटिलेशन है पेशेंट की दैट बिकम्स मोर एफिशिएंट. तो डायफ्रैग्मेटिक, कार्डियक और ट्रांस थोरेसिक और ट्रांस पल्मोनिक जो प्रेशर चेंजेस हैं उसकी वजह से ना सिर्फ डोर्सल लंग एक्सपैंड कर जाता है बल्कि वेंट्रल लंग भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स नहीं होता. और इस तरह वो करने से जब ब्लड सप्लाई है डोर्सल लंग की वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से प्रोनिंग के मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो आते हैं. मेरे ख्याल में जो अगर प्रोनिंग की जाए तो 50% ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19 इज़ द सेल्फ प्रोनिंग. प्रोनिंग जो है उसकी की वजह से जो ऑक्सीजनेशन है और रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देता है. डायग्नोसिस ऑफ द अगर आप ARDS का करना चाहें तो उसमें आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें एक्सरेज आर वेरी कॉमन. यू कैन सी सच काइंड ऑफ एन एक्सरे विच इज़
this, and this is very hazy, and your clear picture that will be seen by the CT scan, and the ground glass specification may be present, and maybe septal thickening, and sparing, a bit sparing is being present in the low zones, and the ultrasonography that play an important role as well. There maybe the B lines are being present. Ultimately, B lines are normally not present in a normal lung, but if you are going to have these straight lines on the ultrasonography, you would be able to see that these straight lines that are going to be representing as that of B lines. If these B lines are more than 5, it means the patient is having septal thickening and the septal alveolitis that is being present. If these B lines are between 3 to 5, it means the patient is having pulmonary edema. So the combination of the pulmonary edema and the ARDS that can be present in our patient, because in ARDS patient might be having myocardial infarction, myocarditis, acute renal failure, patient may be in overload, due to which the fluid retentions are being present, due to which the B lines can be present between 3 to 5. But if the ARDS advanced H type of ARDS is present, these B lines are more than 5. Then the echocardiography that would be able to exclude the cardiac causes too. Pulmonary capillary wedge pressure जो है वो अब ऑब्सलीट होता जा रहा है, जबकि एकोकार्डियोग्राफी से आपको ये पता चलता है कि पेशेंट जो है वो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट पेशेंट की है या नहीं है. एल टाइप ARDS एंड एच टाइप ARDS के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एल टाइप में वेंटिलेशन जो है पेशेंट की ठीक रहती है, लेकिन इसमें वेजोजेनिक ओलिगीमिया दैट इज गोइंग टू टेकिंग प्लेस बिकॉज द प्रॉब्लम इज प्रेजेंट एट द वेस्कुलर लेवल, जबकि वेंटिलेशन पेशेंट की ठीक होती है. इसलिए इसको एल टाइप कहा जाता है, क्योंकि इसमें लो इलास्टेंस मीन्स हाई कंप्लायंस, लो VQ ratio, low lung weight, low lung recruitability, and happy hypoxia that will be present in this patients, because the patient they are having a good ventilation, but the vasogenic edema is being present, due to which the vasoplegia is taking place, due to which a bit of oxygen drop is being present, and these are the kind of patients in which the very friendly and very low level of the ventilatory support will be given to these patients. Whereas other is one is the H type of ARDS, in which the high elastance with low compliance and the high VQ ratio, high weight, and the high recruitability maneuvers that will be present H type. L type of ARDS, due to P-Cili phenomena and due to the immunological mimicry of the activation of the neutrophil activation system and the cytokine release syndrome and the macrophage activation syndrome, the L type of ARDS, they are being converted into the H type of the ARDS, which is a more conventional type of the ARDS. 70% ARDS जो कि कोविड-19 में कंसिडर किए जाते हैं, वो तकरीबन L type ARDS होते हैं, जो कि अल्टीमेटली H type ARDS में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर पेशेंट क्रिटिकली इल होना शुरू हो जाए, और इसमें फुल लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है इन H type of ARDS. Then the concomitant complication, this is the summary in which the sepsis, septic shock, bacterial fungal infection, cardiovascular complication, thromboembolism, and multi-organ failures that can take place in as a complications of the ARDS. ICU management revolves around the ICU oxygen therapy. फेस मास्क से आप नेज़ल कैनुला अगर यूज़ करेंगे तो 5 लीटर से ज़्यादा आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी. तो फेस मास्क से 5 से 10 लीटर और NRM से 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन. एक पेप मास्क यूज़ किया जाता है जो कि एक ब्रिज है बिटवीन NRM और NIV थेरेपी के दरमियान. पेप मास्क सिर्फ एक ऑटो पीप, आपको एक पीप प्रोवाइड करती है, वो पीप विद हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि इसके लिए वेंटिलेटर या बाईपैप मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती. एक ट्रेडिशनल मास्क है जो कि पेशेंट के फेस पे लगा दिया जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, और उसके साथ एक पीप एडजस्ट की जा सकती है जो कि 5 से 10 तक और 15 तक इस्तेमाल की जा सकती है. मैक्सिमम पीप जो इस पेप मास्क में यूज़ की जाती है वो 20 तक है. इट्स अ मैनुअल मास्क, इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक मशीन. दिस इज जस्ट अ मास्क विच कैन बी प्लेस्ड ऑन द फेस ऑफ द पेशेंट लाइक एन NIV मास्क, जिसकी वजह से पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन और रिक्रूटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, और ये एक पीप भी प्रोवाइड करता है. जैसा कि आपको पता है, पीप एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर विद इन द एल्वियोलाई है जो कि उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करती है. उसके बाद NIV थेरेपी जो कि CPAP और बाईपैप की शक्ल में विद अ मैकेनिकल वेंटिलेटरी मोड के साथ दिया जाता है, और NIV थेरेपी जो है अब इंटरनेशनली रिकमेंडेड है. और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस चीज़ में कि पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल ने NIV थेरेपी उसने ईजाद किया, जिसमें NIV थेरेपी जो कि पूरी दुनिया में जो है वो रिकमेंड
हो गई और पूरी दुनिया में जो है एन थेरेपी जो कि कॉन्ट्राइंडिकेशन थी पूरी दुनिया में, और अब एन थेरेपी एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी जो सी है वो यूज़ की गई पूरी दुनिया में एज अ कोविड 19 मैनेजमेंट थेरेपी